this, if Friday prayers cause disunity, in such a case, it has not fulfilled the mission of the genuine Friday prayers as propagated by Islam. Muslims must be brothers, and they should behave with one another on the basis of kindness and affection. And in the meantime, Muslims must be the source of mercy for humanity as a whole. پیغمبر اسلام تنها مسلمان‌ها را هدایت نکرد. The Prophet of Islam not just guided Muslims, but he also propagated morality and ethics and showed to the people of the world the path of righteousness. راجع به پیغمبر اسلام قرآن میگوید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. The President is reciting verses from the Holy Quran. The Holy Quran has stated that the Prophet was a source of mercy for all. ما مسلمانان خیر و رحمت برای همه مردم. The Muslims seek mercy for all human beings. ما در دعایمان این چنین دعا می‌کنیم. While performing supplications, we pray to God, asking God to save all the needy and the poor. ما میگوییم اللهم اشبع کل جائع، هر کس در جهان که در فقر و گرسنگی هست، whoever, any person who suffers from hunger, we pray to God to help him and assist him. اگر اسلام به معنای واقعی کلمه if Islam is introduced to the world people in its true sense, then all human beings will love this religion. If you see a problem in the world of Islam today, if you are witnessing any disunity or rift amongst Muslims, it is an indication that one has not truly learned the genuine concept of Islam and its genuine meaning. اختلاف سے دو چار ہیں اس کی حقیقی معنی یہ ہے کہ مسلمانان عالم اسلام کے حقیقی معنی اور مفہوم سے دور ہو چکے ہیں. این که ما می‌بینیم در برخی از کشورهای اسلامی خشونت وجود دارد و یا اختلاف. In case of witnessing violence in some Islamic lands, the reason is that
we have not, the reason is that we have not guided our younger generation towards Islam and its true meaning. We have no option but unity amongst all Muslims of the world. اگر ما مسلمانان با هم متحد بودیم در آمریکا رئیس جمهور In case of Muslim unity, the US president did not dare to recognize and announce Beitul Muqaddas as the capital of the usurper Zionist regime. अमेरिका के सदर को यह जुर्रत न होती कि शहर बैतुल मुक़द्दस को गासिब सेहूनी ममलिकत का पायतख्त के तौर पर वह ऐलान कर सके. अगर ما मुसलमानان همه با هم متحد بودیم, if we were all united, the usurper Zionist regime couldn't dare to suppress or trample upon the rights of the Palestinians. The Iranian government and the Islamic Republic of Iran is of the view that there is no solution but unity and solidarity amongst Muslims. برادران مسلمان راه نجات ما این است که I'm telling you, our Muslim brothers, that speaking of all Islamic denominations, we should recognize them all, and that is the solution. ما همه گرچه رودخانه های مختلف هستیم اما آب این رودخانه ها از یک چشمه the people can be compared to different streams, but they come from a single spring, and all these streams will eventually pour into one ocean. ما باید آستانه تحمل خودمان را بالا ببریم. We should enhance our tolerance. به تمام مسلمانان و تمام انسانها در سراسر جهان And we should respect all Muslims and respect all people in different parts of the world. The Holy Quran calls upon us as Muslims to behave in a proper manner in order to become a model for all world people. قرآن میگوید و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. The Holy Quran states that you, the Muslims, must be a model for all world people. The enemies of Islam are seeking to create rift amongst Muslims,
But this mosque, the building here, tells us clearly that the people of India and Iran share commonalities as far as science and civilization and culture are concerned. लेकिन मक्का मस्जिद की जो तारीखी मस्जिद है वो इस बात की दलील है कि इस दक्कन के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान और ईरान के मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। उन्होंने अपने आपसी तौर पर मुत्तहिदा सखाफत, मुत्तहिदा तमद्दुन और मुत्तहिदा इल्म को ईजाद किया था। آنچه ما از آثار تمدنی در حیدرآباد می‌بینیم نشان آن است. Speaking of the civilizational realities here in Hyderabad, it is an indication of the commonalities shared by both nations and the fact that both nations have benefited from each other's culture. कि ईरान और दक्कन के मुसलमानों के दरमियान सदियों कदीम तवील ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से ईरान और दक्कन के मुसलमान आपस में एक दूसरे की सखाफत और एक दूसरे की तमद्दुन से बहरावर हुआ करते थे। مردم ایران علاقه خاصی به مردم این سرزمین دارند. The people of Iran are quite interested in this land, and in fact they share, both nations share commonalities. बे इंतहा क़ल्बी लगाव रखते हैं और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान की आवाम भी ईरान के साथ बे इंतहा दिली लगाव और मोहब्बत का मुजाहरा करती है। ما باید روز به روز رابطه این دو ملت را We should strengthen the existing ties between the two nations on a daily basis. The government of Iran is fully prepared to do so, and I hope that the government of India would also voice its readiness in order to facilitate travel and facilitate the visa procedures so that people from India and Iran would be able to easily travel to both countries. हिंदुस्तान भी इस बात का ऐलान करेंगे कि ताकि हिंदुस्तान और ईरान की आवाम एक दूसरे के साथ रफ्त आमद को सहूलत के साथ अंजाम दे सके और हम अपने वीज़ा का जो लिहाज है उसको मुकम्मल तौर पर आसान करने के लिए तैयार है ताकि ईरान और हिंदुस्तान की आवाम आपस में एक दूसरे के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को इस्तवार कर सकें। ایران اعلام می‌کند با توجه with respect to the rich gas and oil reserves of the country, Iran is announcing its readiness to obtain the needed oil and gas supply of India. और एनर्जी से सरशार है और ईरान अपने तेल और गैस के ज़खायर को हिंदुस्तान की आवाम की तरक्की के लिए देने के लिए आमादा व तैयार है। Iran is announcing that via Chabahar port it is prepared to facilitate travel for India and Afghanistan, to facilitate transport via Chabahar port to India from Afghanistan and Central Asia. और हिंदुस्तान की आवाम अपने ट्रांजिट की सहूलत के जरिए अफगानिस्तान, मरकजी एशिया और यूरोप को आसानी के साथ राह को हासिल कर सकते हैं। We believe that the two great nations of Iran and India can cooperate in the fields of industries, agriculture, and also advanced technologies, so as to take steps in order to contribute to the interests of both nations and the region. खेती बाड़ी के शोबे में, जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे में इस तरह से एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं कि ईरान और हिंदुस्तान के आपसी मफादात को भरपूर इस्तेफादा किया जा सके। We all know that security
is a bounty granted by God to us, and we should strengthen security in our countries and the region as a whole. We have helped all Muslim nations, and we are prepared to do so. We helped the people of Iraq, we helped the people of Syria in order to prevent violence and save them from violence and massacre and bloodshed. If the blood of an innocent person is shed on this earth, we are all responsible, and if we save one person from death, we have actually saved humanity. And this is a point touched upon by the Holy Quran. अगर किसी एक बेगुनाह शख्स को कत्ल किया गया और उसके बरक्स एक बेगुनाह शख्स को जिसकी जान की निजात दिलाई गई, तो ऐसा ही है कि इंसानियत को हमने दोबारा जिंदा किया है. ما از امنیت و ثبات در هندوستان در سالهای اخیر خوشحالیم. We are pleased to see security and tranquility in India, and all the people with their ideas and views, there should be unity and tranquility maintained. और इस्तिक़लाल और सिपाह जो हिंदुस्तान में मौजूद है, उनसे हम बेइंतहा खुशहाल और मसरूर हैं. और हम हमारा ये अक़ीदा है कि हिंदुस्तान की दौलत और हिंदुस्तान की अवाम जो कोई भी अक़ीदा रखते हैं, अब आपसी इत्तेहाद को बरकरार रखें और अमन अमाल को माहौल को हमेशा कायम व दायम रखें. इन मर्दम व इन सरज़मीन गरचे दाराय एतिक़ादात व अक़ाइद The people in this land have different views and notions, but spirituality is of significance for all denominations and sects in this land. You can see the Western civilization you see in the United States. There's a massacre of people in schools, in university campuses. So therefore, materialistic civilization cannot save us. वहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में लोगों का इज्तिमाई तौर पर कत्लेआम किया जाता है. उसकी माना यह है कि मादी तमद्दुन इंसानियत की फलाह व बहबूद का ज़ामिन नहीं हो सकता. ما اونهایی که به برخی از ملت‌های مسلمان those who have imposed a travel ban on some Muslim nations and describe Muslims as terrorists, we do condemn them for their actions. And Muslims recite their prayers they start their prayers in the name of God, the All-Merciful, the Compassionate, the Merciful, and in fact, Muslims' lives are based on kindness and affection. कि दुनिया भर के मुसलमान जहां कहीं भी नमाज को अदा करते हैं तो पहला जुमला जो मुसलमान अदा करते हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है. अल्लाह को रहमान की हैसियत से, रहीम की हैसियत से याद करते हैं और दर हकीकत इस बात का पैगाम दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं कि दीन इस्लाम दीन रहमत और दीन मोहब्बत है. हमें ये दुनिया बेदानंद के the whole world should know that morality is our
most important asset, and this is a point emphasized by the Prophet of Islam. मुसलमानों का अखलाक और किरदार है और अल्लाह ताला ने रसूल अकरम को इस बात पर मबूस फरमाया कि रसूल अकरम दुनिया के मुसलमानों को मकारे में अखलाक की आला दर्जे तक पहुंचा सकें. The Prophet of Islam has told us that one should not just suffice to prostration, ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة تنها نماز خواندن نیست. The Prophet says it's not just performing the prayers. One should also believe in trust and believing in truth and protecting one's trust. And in fact, honesty is one of the major pillars of Islam. कि मुसलमानों के तूलानी रुकू और तूलानी सजदों के जानिब ना देखो, बल्कि मुसलमानों की अमानतदारी और राजगोई और सदाकत के जानिब देखो. लिहाजा हकीकी इस्लाम वो ये है कि जो सदाकत, राजगोई और अमानत का दर्ज तमाम मुसलमानों ने आलम को देता है. We have no option but to pursue the moral teachings and follow the moral teachings of Prophet Muhammad. और हमारे निजात का रास्ता अखलाक मोहम्मदी पर पैरोकार होने में मुसलमानान आलम की निजात है. Others want to humiliate Muslims. In the course of history, Muslims have enjoyed grandeur and a rich civilization and culture, and the future belongs to Muslims. लेकिन हम उनको सामने ऐलान करना चाहते हैं कि आलम इस्लाम और मुसलमानान आलम तारीख के हर दौर में अजमत के हामिल रहे हैं, इल्म और तमद्दुन के हामिल रहे हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा और मुस्तकबिल में भी मुसलमानान आलम इल्म और तमद्दुन और अजमत के हामिल होंगे. Based on Quranic teachings, we believe that the divine teachings will enlighten the path ahead of us. कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि नूर इस्लाम कभी भी खामोश नहीं होगा, और जो कोई नूर इस्लाम को खामोश करना चाहते हैं ये गलत तस्वुर है जो उनके जहनों में मौजूद है. The Shias and Sunnis and all Islamic denominations pursue one objective, and that is the status of the Prophet of Islam. सिर्फ उनका हदफ एक ही हदफ है, वो हदफ नाम मुबारक अजीम पैगंबर अकरम इस्लाम है कि अल्लाह ताला ने पैगंबर अकरम इस्लाम के नाम को वसअत और रफ़त पूरे आलम में और इंसानियत में बख्शी है. Our most important duty is to spread mercy and affection amongst human beings. The companions of the Prophet and the leader of the faithful Imam Ali quoted the Prophet as saying that one should take steps for reforming the affairs of Muslims, and that is superior to the daily prayers and fasting.
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम शान सहाबी मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन इबादत एक साल की इबादत का सवाब इसमें मौजूद है कि मुसलमानों के दरमियान, इंसानों के दरमियान सलाह और सफाई और मोहब्बत में वजूद लाएं, उनके दरमियान आपसी इख्तलाफात को दूर फरमाएं। वसब्त रसूल खुदा हुसैन इब्न अली And Imam Hussein, peace be upon him, has also taught us that if a person has no faith, he or she should live freely. रोज़े आशुरा को ये तारीखी जुमला अता फरमाया था, गरचे तुम लोगों के पास दीन इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, लेकिन दर हकीकत अगर ईमान भी ना रखते हो, हुर्रियत इंसान और मुसलमानों के दरमियान होना लाजिम और मंजूम है। Despite all the hostilities towards Islam, the future belongs to Islam in this world, and the future belongs to Asia, and also the great civilization of this century belongs to Asia, and Iran and India will also strengthen their relations. मुसलमानों का मुस्तकबिल रोशन है, और क्योंकि ये आने वाली सदी और जो मौजूदा सदी है वो एशिया की सदी है। दर हकीकत दुनिया में जो तमद्दुन जो उरूज पे पहुंचेगा वो एशियाई तमद्दुन होगा, और दर हकीकत ईरान और हिंदुस्तान ऐसे तमद्दुन के हामिल होंगे, इस तरक्की के राह पर गामजन होंगे कि दुनिया के लिए मशअले राह होंगे। जिंदाबाद इस्लाम, I praise Islam and India, and long live Islam, India, and long live India, and long live Iran. Well, ladies and gentlemen, that was live from Hyderabad in India's Iranian President Hassan Rouhani was speaking after the Hyderabad Friday prayers. Let's just quickly go over what was just said by the Iranian president. President Rouhani stated that Muslims are showing their unity by participating in these Friday prayers, and that all human beings will fall in love with the true sense and essence of Islam. He stated that unity among Muslims would have prevented the U.S. president from recognizing Jerusalem al-Quds as the Israeli capital. He also added that Iran and India have shared commonalities in their long histories, and that दुनिया में जो तमद्दुन जो उरूज पे पहुंचेगा वो एशियाई तमद्दुन होगा, और दर हकीकत ईरान और हिंदुस्तान ऐसे तमद्दुन के हामिल होंगे, इस तरक्की के राह पर गामजन होंगे कि दुनिया के लिए मशअले राह होंगे। जिंदाबाद इस्लाम, I praise Islam and India, and long live Islam, India, and long live India, and long live Iran. Well, ladies and gentlemen, that was live from Hyderabad in India's Iranian President Hassan Rouhani was speaking after the Hyderabad Friday prayers. Let's just quickly go over what was just said by the Iranian president. President Rouhani stated that Muslims are showing their unity by participating in these Friday prayers, and that all human beings will fall in love with the true sense and essence of Islam. He stated that unity among Muslims would have prevented the U.S. president from recognizing Jerusalem al-Quds as the Israeli capital. He also added that Iran and India have shared commonalities in their long histories, and that quote, we should strengthen the ties between Iran and India. He also added that Iran is ready to meet India's needs in regards to oil and gas, and that strengthening security in both countries are among the top priorities of New Delhi and Tehran. President Rouhani also slammed the U.S.'s travel ban on Muslim nations. Of course, we'll keep you posted on all the latest details of President Hassan Rouhani's official visit to India right here on Press TV. For now, we're going to return to the normal course of programming, and in just under 9 minutes, we'll be back with the world news. Bye for now.